Okay, so this is the in short the acronym which we had seen before also. GITA. So first is Guru, which is a absolute need of such a spiritual master, spiritual guide in our life. Next, yeah. So now this Bhagavad Gita, second chapter, first 10 verses. This talks about how Arjuna is confused. Krishna chastises, and then that's how the Arjuna accepts him as his guru. So just a minute. So here we see the first three are how Krishna is chastising Arjuna in the beginning. Because if you see the whenever Guru is there and disciple is there, the Guru and disciple, this relationship is such that the Guru makes sure that disciple is in the learning mode. And how we know that somebody is in learning mode or not? We can see whether they are in learning mode or not by how much capacity he has to absorb, tolerate the chastisement also. When he's corrected, how he takes that correction. And that's how we can see that whether that person is ready to learn, ready to mold. And if that is not there, then he becomes disqualified to become the real student, like that. I still remember जब हम एनसीसी करते थे, एनसीसी में like they do many things. There is a drill, and then there is a shooting exercise, and many other things are there. Camps are there. तो एक high officer had come, और वो जब उनका आर्मी में kind of दाखिला होता है, they enter into army, then their training is very rigorous. उनका जो ट्रेनिंग होता है वो बहुत उनको बहुत लाइक कस के ट्रेनिंग होता है उनका, कि वो पूरा देखते हैं कि इसका मेटल क्या है, इसका रियल फाइबर क्या है, उसका चेक करते हो. तो उनका चेक करने का एक बहुत स्पेशल तरीका होता है. तो मेरा एक दोस्त बोल रहा था ये कि उनको कैसे चेक करते थे. तो जब वो आर्मी का नया जस्ट ज्वाइन करने वाला आता है, तो उसका जो कर्नल होता है या उसका जो ऊपर का बॉस होता है उसका, वो बुलाता है उसको, बोलता है कि देखो
आप आर्मी में आए हो तो कुछ भी करना पड़ता है, क्योंकि जब वॉर होता है तो ऐसा नहीं चलता कि मैं सिर्फ गोली चलाऊंगा, बाकी कुछ नहीं करूंगा। नहीं, कभी गाड़ी चलाना होता है, कभी कुछ करना पड़ता है। तो बोले कि आप यहाँ पे अभी 1 मीटर, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 मीटर का गड्ढा खोदना है आपको। तो बोला ठीक है सर, खोदता हूँ ना, क्यों क्यों नहीं, आप बताओ। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे 1 मीटर बाय 1 मीटर का एक गड्ढा खोदो। तो गड्ढा खोद खोद रहा था वो। 1 घंटे बाद वो पूरा अच्छे से खोदा उसने। तो जो उनके ऑफिसर है वो आया वहां पे, और गड्ढे को देख के उसको चिल्लाने लगा। वो बोला, मूर्ख, कौन बोला तुमको यहाँ पे गड्ढा खोदने के लिए? मैं तुमको बोला था यहाँ पे गड्ढा खोदो, तुमको इतना भी अकल नहीं है? वहां पे गड्ढा खोद दिया। ये यहाँ पे बोला था मैं, यहाँ पे खोदो। तो तो वो बोला कि ठीक है ठीक है। तो वहां पे खोदा उन्होंने गड्ढा। तो बाद में वापस आया वो। तो बोला, तुमको आर्मी में आए हो, तुमको अकल नहीं है कहाँ पे खोदने का? और फिर तीसरा जगह दिखाया, यहाँ पे खोदो, क्योंकि हमको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है, और तुम ऐसे ही गड्ढा खोद रहे हो तो कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। तो जब तीसरा टाइम आया तो वो लड़का बोल पड़ा, वो बोला कि देखो, एक तो आपने ही पहले बोला था यहाँ पे गड्ढा खोदने के लिए, और आप वापस आके बोलते हो कि ऐसा मत करो। तो मेरा क्या गलती है उसमें? आप बताओ, मैं 50 गड्ढे खोदूंगा, लेकिन आप ये मत बोलिए कि मैं गलत हूँ और यहाँ पे आपने गड्ढा खोदा है। तो फिर वो फेल हो गया वो। तो जनरली, क्योंकि आर्मी में तो ये बहुत उनको देखना पड़ता है कि जब फाइटिंग वगैरह होता है तो वो ऑर्डर देते हैं, वो शूट या स्टॉप एंड शिफ्ट योर प्लेसेस वगैरह वगैरह। अगर वो इंस्ट्रक्शंस तुरंत फॉलो नहीं किया उसने, वहां पे अगर वो पूछते बैठे हैं कि ऐसा क्यों करने का, बाद में कर सकते हैं क्या, तो उसका चांस ही नहीं है कुछ ऐसे। तो वो देखते हैं कि ये कितना तुरंत जो भी बोलेगा वो करेगा। ही विल नॉट इवन आस्क कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये कर सकते हैं क्या, वो दूसरा कुछ कर सकते हैं क्या, क्योंकि उतना ना तो टाइम होता है, ना तो उतना स्पेस होता है वहां पे। तो वैसे ही यहाँ पे हम देखते हैं कि जब भगवान बोलने लगे तो पहले तो अर्जुन को बहुत डांटने लगे। तो क्या डांटने लगे यहाँ पे देखते हैं। भगवान सेकंड श्लोक में डांटते हैं भगवान। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। तो आप सब लोग भी दोहरा सकते हैं मेरे पीछे। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् नार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। अकीर्तिकरमर्जुन। So here Lord is asking Arjuna, भगवान पूछ रहे हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदम, की कश्मल मीन्स इम्प्यूरिटी। तो भगवान बोलते हैं कि ये जो हृदय का इम्प्यूरिटी है, आज तक आपने ऐसे कभी बोला नहीं था मैं लड़ाई नहीं करूंगा। आज तक आपने कभी ऐसा बोला नहीं कि मैं अपना कर्तव्य नहीं करूंगा। आज पहली बार आप ऐसे बोल रहे हो कि मैं
लड़ाई नहीं करूंगा, आपका तो पूरा जीवन लड़ाई करने में गया, तो ये आज अचानक से कहां से आ गया ये? तो भगवान सरप्राइज होके ये पूछ रहे, कुतस्त्वा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम, कि ऐसे सिचुएशन में जब ये ऐसा विचार बहुत भारी हो सकता है, क्यों? क्योंकि आपने पूरा जीवन इसके लिए अलग अलग रूप से इतने सारे शस्त्र अस्त्र सीखे, इतने सारे साल आपने वनवास में बिताए, और पूरा जीवन जिस युद्ध के लिए आपने ट्राई किया, और अचानक से ये युद्ध से जाने का आपका मन कैसे बना? तो वो तो पहले पूछ रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं बहुत सरप्राइज हूं कि आपका ये रिएक्शन देख के। तो इसलिए वो बोलते हैं कुतस्त्वा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम, क्योंकि अगर अर्जुन घर में बैठे कुछ डिस्कशन चल रहा है और वो बोलते होंगे कि ठीक है, वो युद्ध नहीं हो तो अच्छा है, वगैरह वगैरह। क्योंकि आज हम देखते हैं कि आज बाहर भी युद्ध चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन में, और हमको पता नहीं कि कितने और देश उसमें जुड़ जाएंगे, और ये न हो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर चालू हो। और इसके लिए कल शाम को 5 बजे से 7 बजे तक मुंबई के 4 मंदिर है मुंबई में, राधा रासबिहारी जुहू में, राधा गोपीनाथ ग्रैंड रोड में, और राधा गिरिधारी मीरा रोड में, और राधा मदन मोहन न्यू मुंबई, नवीन मुंबई में। तो ये 4 मंदिर के सब भक्त एक साथ आएंगे गेटवे ऑफ इंडिया कल शाम को, और वहां से क्रॉस मैदान तक एक 2 किलोमीटर का रास्ता है, 1.5 किलोमीटर ऑलमोस्ट। तो ऑलमोस्ट 200-300 भक्त हरिनाम संकीर्तन करते जाएंगे क्रॉस मैदान तक, और यही एक मैसेज है कि मैसेज ऑफ पीस। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद बोले, जब इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा था, होने वाला था, तो प्रभुपाद बोल रहे थे कि कभी भी थर्ड वॉर हो सकता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि सबके पास एटम बॉम्ब है, सबके पास भारी मात्रा में शस्त्र अस्त्र है, और वो यूज किए बिना नहीं रहेंगे वो। क्योंकि ये जो दूसरों को दिखाना कि मैं कितना श्रेष्ठ हूं, ये इच्छा तो हर एक में रहता है, तो वो इच्छा के कारण लोग तो तैयार है, उनको सिर्फ एक कुछ रीजन चाहिए युद्ध करने के लिए। लेकिन प्रभुपाद बोले कि ये युद्ध खत्म हो सकता है अगर हम आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक वाइब्रेशन बढ़ाए ये दुनिया में। तो बोल रहे थे कि अगर हम भगवत गीता ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें और हरिनाम ज्यादा से ज्यादा करें, तो ये जो निगेटिव वाइब्रेशंस है थर्ड वर्ल्ड वॉर के, वो मिट सकता है। तो उसका मतलब है कि जो हम भक्ति कर रहे हैं वो इतना शक्तिशाली है कि वो थर्ड वर्ल्ड वॉर को भी खत्म कर सकता है। हम घर में बैठ के हरिनाम करके ये जो भी निगेटिव वाइब्रेशन है उसको बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भगवान बोल रहे हैं वो है धर्म युद्ध। ये आजकल के जैसे दो राष्ट्र जो अपना सुपीरियरिटी के लिए फाइट करते हैं, दैट इज मटेरियल वॉर। उससे आध्यात्मिक लाभ नहीं होता है, धार्मिक लाभ तो कुछ नहीं होता है उससे। लेकिन जो अर्जुन
और कौरवों में जो युद्ध हुआ, दैट वाज द धर्म युद्ध। और ऐसे धर्म युद्ध का रिजल्ट भी धार्मिक ओनली। कैन यू गो बैक? क्या या तो यहाँ पे भगवान उनको बहुत कठोर शब्द में बोल रहे हैं कि ये ऐसा जो इम्प्यूरिटी है वो आया कहां से, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। दूसरा बोल रहे अनार्य। अनार्य, आर्य का मतलब है जो व्यक्ति को पता है कि जीवन का ध्येय क्या है। जीवन का ध्येय है भगवान की प्राप्ति। तो ये जिसको पता है उसको बोलते हैं आर्य। जिसको he knows the importance of human life, he knows the importance of spiritual practice, so he is an arya, he is called as. Anarya means ignorant about real self interest, कि आत्मा के बारे में जिनको पता नहीं है, ये जीवन के बारे में उनको पता नहीं है, आध्यात्म के बारे में जिनको पता नहीं है, उनको बोलते हैं अनार्य, जो आर्य नहीं है। बेसिकली आर्य मीन्स a gentleman, anarya means not gentle. और वो बोल रहे हैं कि क्योंकि आप ऐसा कर रहे हो अस्वर्गीयम, बोल रहे कि आपको हायर उसका प्रमोशन नहीं होगा अगर आप ऐसा युद्ध छोड़ के जाएंगे तो। अस्वर्गीयम अकीर्तिकरम अर्जुन, तो बोले कि ये दुनिया में आपका अकीर्ति होगा और दूसरे जन्म में आपको प्रमोशन तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आपके मन में ऐसा अभी ये प्रश्न आया है, ये जो कश्मलम, दिस इज इम्प्यूरिटी आया है। तो उसका मतलब है जब भी हम अपने कर्तव्य से दूर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इम्प्यूरिटी। जो भी हमारा कर्तव्य है, तो हमारे जीवन में दो टाइप के कर्तव्य होते हैं। एक तो है भौतिक कर्तव्य, जो हमारे शरीर से निगडित होता है, शरीर से कनेक्शन में होता है। जैसे अभी हम किसी स्कूल में जाते हैं तो हमारा कर्तव्य होता है कि वो स्कूल के सब नियमों का पालन करके हमको पढ़ाई करना है, वो शरीर धर्म है। या हम जॉब करते हैं तो जो भी जॉब के नियम हैं, जो बॉस है उसका पालन करना, उसका सब करना, वो भी शरीर धर्म में आता है। कोई मैरिज करते हैं, सो देयर इज अ पति धर्म, देयर इज अ पत्नी धर्म, सो दिस इज आल्सो moral responsibilities in one's life, so that is also called our sharira dharma, that is connected to our material body. So there are many such dharmas in our life which we go through. So that's why Krishna is calling Arjuna here when he is talking to leave the fight as anarya. Anarya is like a bad word he is giving to, that how can you do like this? So he's telling anarya dishtam aswargyam akirtikaram Arjuna, and then he's telling that this will surely not bring glory to you. You will lose the name and fame of not only you but your family also, your dynasty also. People will say that, no, what kind of son is this, what kind of person in this whole dynasty. So that was the Krishna's first insight, kind of. He was inciting Arjuna that, no, you fight, don't be anarya, don't be
cause of your own ruin. Don't be cause of your akirti. People will talk ill about you. And then Krishna says ahead, Klaibyam smagama partha naitattvai upapadyate kshudram hrudaya daurbalyam tyaktvotistat parantapa. So here, first Krishna said that this is completely wrong, not to be done. And then Krishna gave his kind of order. He says, Klaibyam ma sma gamah partha naitattvai upapadyate. So this situation which you are in, the way you are depressed, the way you are hopeless, the way you are kind of given up the fight, that surely does not befit you. वो आपको शोभा नहीं देता है. He says, पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते, कि आपको ये शोभा नहीं देता है आप ऐसे बात कर रहे हो. तो हम देखते हैं कि person is corrected depending on his status, like that. एक बार ऐसे हुआ था कि धर्मराज युधिष्ठिर महाराज, उनके राज्य में 3 लोग थे जिन्होंने गलती किया था. एक ही गलती किया था. तो जब ये तीनों लोगों को बुलाया गया सभा में कि ये 3 लोग हैं और उन्होंने गलती किया है, तो उनको क्या करना चाहिए. गलती तो एक ही है, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर महाराज जो थे वो बोले कि नहीं, पहले मुझे बताओ कि ये लोग कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है, उससे फिर मैं उनको दंड दूंगा. तो एक पहला जो था वो तो निकला एक बिजनेसमैन था वो. तो युधिष्ठिर महाराज ने तुरंत बोला उनको कि इनको फाइन करो, कुछ 1000 स्वर्ण मुद्रा ऐसे गोल्ड कॉइन्स. और फिर दूसरा व्यक्ति को बुलाया. उनको पता चला कि वो क्षत्रिय कुल से हैं. तो जब उनको पता चला तो उन्होंने बहुत उसका अपमान किया. बोले तुमको शर्म आना चाहिए, इतने बड़े घर से हो तुम और ऐसा काम करते हो. तो बहुत उसको डांटा, बहुत. तो और फिर वो बोले कि जाओ यहाँ से, बाद में कभी ऐसा मत करना. और तीसरा व्यक्ति जब आया, उन्होंने सुना कि ये जो है वो ब्राह्मण कुल से है. और तो जब वो आए शिक्षा दंड लेने के लिए, तो युधिष्ठिर महाराज ने सिर्फ उनको बोला कि देखो ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता है, आप जा सकते हो. तो सिर्फ इतना बोल के उनको भेज दिया, उनको कुछ बोला नहीं. और तो जब उनको पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया है, सबने तो एक ही क्राइम किया था, लेकिन पहले व्यक्ति को आपने दंड किया. फाइनल इट वाज लाइक you gave him a penalty and then he has to pay for it. Second person, you didn't ask penalty, you just chastise him and then send him off. और थर्ड तो आपने कुछ किया ही नहीं, उसको ऐसे ही भेज दिया वापस बिना कुछ बोले. So then he was telling that more people are refined. You don't need the punishment is decided depending on how refined people are. When people are not refined, even if you beat them, they will not understand.
But somebody is refined, one sharp look that you are wrong, he will not do that again for his life. So here also, understanding that Arjuna is very refined person. Krishna is just telling that ये आपको शोभा नहीं देता है ऐसा करना, तो अभी आप ज्यादा समय मत गाओ और जल्दी से लड़ाई चालू करो. तो इसलिए वो बोलते हैं क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप. सो कृष्ण ने अपना जजमेंट भी दिया कि देखो अर्जुन, आप जो ऐसा बोल रहे हो ना लड़ाई छोड़ने का, वो आपका हृदय दौर्बल्य है, ये आपका डिजीज है, ये आपका that is the situation which is making you think like this. और वो क्या बोले कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्य. क्षुद्रम मीन्स वेरी पेटी. तो कभी कभी हमारे जीवन में भी हम देख सकते हैं कि ये हृदय दौर्बल्य के कारण बहुत बार हम we are not able to do right thing at right time. For example, sometimes in relationships we see that such kind of conflicts happen. But then when we are talking about the relationships among each other, among the family members, among the our friends, near dear ones, so these two things becomes utmost important. One, forgiveness, and second, tolerance. So first is tolerance, that if something opposite happens than what we desire or what we expect next person to behave in particular way, we expect particular reaction, we expect particular affection, but then that doesn't come, then we tolerate that he is a different person, he has a different mindset, he has a different values than me, so no problem. And second is, even if sometimes he does mistake, we should be able to forgive him. And on this two thing only the relationships actually develops. So a person with hridaya daurbalya, person with very weak heart, will not be able to do these two things. One, he will not be able to tolerate. Second, even if somebody is mistake, he will not be able to forgive. So it is very important in our life that we learn these two very important principles: to tolerate when something is done to us wrong. We think it wrong, that such and such person should not have said like this. उसको ऐसे बोलना नहीं चाहिए था मुझे. कुछ लोग तो इतना अफेक्ट हो जाते हैं कि मैं जब जा रहा था तो उसने मुझे ऐसे देखा, तो कुछ लोग उसमें ही उलझ जाते हैं कि ऐसा क्यों देखा, मुझे ही ऐसा क्यों देखा, आज ही ऐसा क्यों देखा. सो बहुत बार लोग दे आर लाइक गूफ्ड अप, उलझ जाते हैं ऐसे चीजों में और बहुत सारा समय गवा देते हैं ये बहुमूल्य मनुष्य जीवन का. क्यों? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू टॉलरेट, दे हैव नॉट practiced it. So that tolerance is very crucial. And second is more difficult, and that is to forgive. I don't know how many of you have ever kind of seen the power of forgiveness. Person who forgives can never become unhappy, because that is very powerful weapon
by which we can actually defeat our complaining mind. Mind keeps complaining. This is that, this is that, that is not good, this is not good. But then, just by taking to this forgiveness, we can actually defeat our dissatisfaction, unhappiness, our critical mentality. So at our stage, this is our Hridaya Daurbalyam, that we are, we become overpowered by our own emotions, not able to check our emotions. In this case, Arjuna was unnecessarily too much thinking about Kauravas. Although they were wrong, he was thinking that let me kind of leave them. So that becomes the Hridaya Daurbalya. Hridaya Daurbalya means weakness of heart. So here in this case, the Arjuna is telling that I want to leave this Kauravas. I want to make them free. I don't want to fight with them. Let them live. So then here the so the Hridaya Daurbalya means the weakness of our heart, where we are not able to behave in right way. So that's what Arjuna is blamed by Krishna. He says, Chudram Hridaya Daurbalyam Chattotishta Parantapa. That you give up this, the pettiness of your heart, and you get up and fight. So this is the so basically Bhagavad Gita ends with this two shlokas only. Krishna is telling that it's not good for you, and why it is happening like this, because you have become weak at heart. And what to do? No, just get up and start fighting. So Krishna in 2 verses only has kind of done the diagnosis and given the medicine also, and the what you are doing procedure also is given, how to come out of it. But then we find that after this thing also Arjuna had still problems. And same thing also we can see in our life also, that sometimes we also know what is the problem. We also know what is the solution. But then the problem is we are not able to apply the solution. Like I was seeing one of the t-shirt, many times they put so many slogans in t-shirts. So one of the slogan on the t-shirt was that our life would be far better only if, our life will be far better only if we could apply the suggestions which we give to others. Like that. So, because when it comes to give suggestions, we give such nice suggestions to others. कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? ये तो बहुत सिंपल है, ये करो. लेकिन when it comes to our own life, then it becomes difficult, like Mount Everest crossing. So Bhagavad Gita gives that very powerful inspiration and support to do that
impossible looking task. So it's like that. Yeah. So today we just saw this, two verses which are uh, which we can understand the heart of Arjuna and what Krishna is wanting from Arjuna. We saw that anarya means person who doesn't understand the value of his life, and he's called as anarya. And Krishna is telling that this is from where this impurity has come, that you never said like this throughout your life. First time you are refusing to fight. And then he told that this is just because of your Hridaya Daurbalya, that it is your weakness of heart, that you have become unnecessarily soft towards the wrong people. So that means these both things are considered Hridaya Daurbalya. One, when you become too harsh towards people, that is also Hridaya Daurbalya. And we become too soft to people, then that is also Hridaya Daurbalya. For example, if a parent, if they become too harsh to their children, that is Hridaya Daurbalya. Sometimes you find some parents, they punish their children, they beat their children, they feel that the children are like their kind of, it's like they're slaves only, like that. They do. So that is also one type of mistake. Second mistake at other end is this, that they are very soft, so soft that they are not able to say even one word, even if the child is doing something wrong. They feel that, if I tell him wrong, how he will feel, and if I correct him, he will feel bad, and this and that. So both these things are under Hridaya Daurbalya. So either being too harsh when it is not needed, or becoming too soft when it is not good for the child. So best thing is to be disciplined, and then love. So love and discipline both has to be together. So when the time is there for discipline, we discipline, and when there is time to love, we love. We don't kind of flip both things. Yeah. Okay. Any questions? हरे कृष्णा प्रभु जी। एक डिलेमा हमेशा रहता है कि जब भी वेनेवर हम सुनते हैं महाभारत के बारे में, जब कौरवों और पांडवों ने लड़ाई के बारे में सोच लिया था, तो देन इट इज समटाइम्स ऐसा दिमाग में आता है कि इट्स वेरी ऑड कि उस टाइम पे अर्जुन के माइंड में ऐसा आया कि नहीं लड़ना चाहिए या करना चाहिए। आज की तारीख में भी जैसे वॉर्स होते हैं तो पहले से ही सब एनालिसिस हो जाता है कि इतना डिस्ट्रक्शन होगा, ये होगा, करना है नहीं करना। नॉट एट द पॉइंट ऑफ कि जब आर्मीज लड़ना शुरू करने वाली हैं उस टाइम पे यू डोंट टेक अ डिसीजन कि अब करें कि नहीं करें। सो बिकॉज अर्जुन रियलाइज्ड, मे बी बिकॉज अर्जुन रियलाइज्ड कि दिस विल बी मास डिस्ट्रक्शन, दैट्स व्हाई, दैट वाज द रीजन। एंड बिकॉज जो जिनके अगेंस्ट ही वाज फाइटिंग दे वर आल्सो रिलेटिव्स,
So, is it more than a war only, or is it because I'm answering my own question, but ये वॉर के सेटअप में दुविधा थी, बिकॉज ऐसी दुविधा बार बार आती है कि ऑफिस में भी समझ लीजिए, अगर हमको अपना कर्म करना है लेकिन उसकी वजह से अगर किसी का जाने में नुकसान हो रहा है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम रुक जाएंगे, हमें तो अपना काम करना ही है. Yeah. सो इज दिस द होल लॉजिक अबाउट दिस गीता का, जो कृष्ण जी ने जो अर्जुन को बताया था गीता के बारे में? Yeah, yeah. So what we learn from this is this, that one has to be very sensitive towards others' difficulties, and that should be always the kind of protocol in our behavior, that we should always think twice before we do anything like this. For example, one man, he was the kind of person who issues the license. He used to issue the license of four-wheeler truck, like that. So one truck driver who came, and he failed in that test. But then he said that, sir, I'll give you 5,000 rupees, but give my this license. So he said, ये नहीं ऐसा नहीं कर सकता मैं. बोले ये कहाँ पे आप चलाने वाले? वो बोला मैं ये ट्रक अभी सीखा हूँ, और ये अगर लाइसेंस नहीं मिला मुझे तो मेरा अभी ये जो लोकल बसेस है उसमें मेरा सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो गया है. अगर ये लाइसेंस नहीं आया तो सिलेक्शन like that will be off, and then I'll be losing that job. So आप मुझे ये दे दो. So now he has to think in both terms, that okay, he is getting 5,000 rupees, and एक जन का जीवन थोड़ा सा हेल्प हो रहा है वो 5,000 से. लेकिन दूसरा साइड भी आता है कि वो 5,000 रुपए तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन you are taking a risk of 50 people sitting behind him when he is traveling. तो कल जाके कहीं वो कुएं में डाल दिया गाड़ी, किसी और कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो who is responsible? So one thing is there, that Arjuna was sensitive in that sense, that he was deciding that okay, although previously I thought that war is good, but now I feel that I should again think about it. So that is one sensitivity we learn. बहुत बार ऐसे होता है कि some very sharp shooting mail comes to us, that in the mailbox we see, and then that practically pierces you, wounds you, and then you also in that whole rage you write another mail hitting him back with all similar thing. But then it is always better to put that mail in draft for one day, and then you can decide to send it next day. Many times your mind will change, or you will change the wordings of the mail. Correct. I have done that. Yes. So that is so that's your sensitivity. You are following Arjuna. So so that one thing we learn is that sensitivity. Second thing we learn is how we should not kind of lose our track when the last moment is there. So that is a negative side of that decision making at the last moment.
So in such things we should not do. Sometimes some people, they lose their courage on the last moment. Something they are very prepared, this thing, that thing, but last moment they lose their courage. They feel that शायद होगा नहीं होगा, शायद नहीं होगा, छोड़ दो, like that. So that we should not do. That's what we, and वो होते रहता है बहुत बार कि we are about to do something which is very important, but then we feel that नहीं करते. So that also should not be done. So we should surely execute our plans, but then while executing our plans, we should be very sensitive. So these two things we learn from that. Okay? Understood, Prabhu. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, any other question? Okay, so can we end here then for today? Ji, Prabhuji. Okay. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji, for wonderful class. So we shall loudly chant 3 times Hari Bol for Prabhuji. Hari Bol. 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 Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. I'm so sorry. There was no network there. I was with very great difficulty. I got this. Okay, So okay. now, sorry, I was not able to join. Now I will listen to your recording. Lalit Prabhuji, please send the recording of this class and the last class also. Yeah. Yes, ma'am. Thank you, Prabhuji. Thanks a lot, Prabhuji. Hare Hare Thank you so Krishna. much, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Bol.